नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस धमाकेदार कॉन्सेप्चुअल मास्टर क्लास में। अगर आप क्लास 11th, 12th, पीजीटी फिजिक्स या बीपीएससी टीआरई 4.0 जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। आज हम थर्मोडायनामिक्स के उस टॉपिक का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे जो एग्जामिनर्स का ऑल टाइम फेवरेट है, द जूल थॉम्सन इफेक्ट। तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलेंगे। पहले जानेंगे कि जूल थॉम्सन इफेक्ट है क्या, फिर इसका डेरिवेशन निकालेंगे, इन्वर्जन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट समझेंगे, आइडियल और रियल गैस को कंपेयर करेंगे, जेटी और एडियाबैटिक एक्सपेंशन का डाउट क्लियर करेंगे और लास्ट में एक क्विक एग्जाम रिविजन होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, व्हाट इज जूल थॉम्सन इफेक्ट। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल, जब गैस फैलती है तो वो ठंडी क्यों होती है? क्या कभी इस बात पर आपने गौर किया है? मतलब डेली लाइफ में भी अगर देखा जाए, जब किसी हाई प्रेशर वाल्व से गैस अचानक लीक होती है ना, तो वो ठंडी लगती है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक ऐसा फिजिक्स पैराडॉक्स है जिसका सीधा जवाब आज के हमारे इस कॉन्सेप्ट में छिपा है। एग्जैक्टली यही है जूल थॉम्सन इफेक्ट। ये असल में एक रियल गैस के टेम्परेचर में आने वाला वो चेंज है जब वो गैस किसी वॉल्व या पोरस प्लग के थ्रू एक्सपैंड करती है, वो भी पूरी तरह से इंसुलेटेड रहकर। लेकिन रुकिए, यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? ये एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इस पूरी प्रोसेस में गैस की एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। बाहर से कोई हीट नहीं आती, सिर्फ अंदर की इंटरनल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बदलता है। एग्जाम्स में डायरेक्ट ये कीवर्ड्स आते हैं तो इन्हें एकदम दिमाग में लॉक कर लीजिए। सेक्शन 2, डिराइविंग द जेटी कोएफिशिएंट। अब जो भी स्टूडेंट्स पीजीटी फिजिक्स टारगेट कर रहे हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दें। हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है, इसे 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट, एंथैल्पी को एक स्टेट फंक्शन मानेंगे। सेकंड, क्योंकि ये इसेंथैल्पिक प्रोसेस है, हम एंथैल्पी चेंज यानी डीएच को 0 सेट करेंगे। और थर्ड, प्रेशर से डिवाइड करके मैक्सवेल के रिलेशंस लगा देंगे। एकदम लॉजिकल फ्लो है, राइट? स्क्रीन पर देखिए, ये फंडामेंटल एंथैल्पी इक्वेशन हमें साफ साफ बता रही है कि एंथैल्पी यानी H पूरी तरह से गैस के प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। हमारे डेरिवेशन का ये एकदम सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जैसा हमने अभी डिस्कस किया, जूल थॉम्सन इफेक्ट एक इसेंथैल्पिक प्रोसेस है। तो बस जैसे ही हम DH को 0 करते हैं, हमें इक्वेशन के टर्म्स को रीअरेंज करने का मौका मिल जाता है। इससे हम उन कोर वेरिएबल्स को अलग कर सकते हैं जो हमें अपने कोएफिशिएंट के लिए चाहिए। और मैक्सवेल रिलेशन अप्लाई करने के बाद बूम, ये रहा फाइनल एक्सप्रेशन। इस फॉर्मूले को तो बिल्कुल रट लीजिए। यहाँ म्यू जेटी यानी जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट कांस्टेंट एंथैल्पी पर प्रेशर के बदलने से टेम्परेचर में होने वाले बदलाव को मैथमेटिकली शो कर रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कई न्यूमेरिकल्स की जान है ये फॉर्मूला। सेक्शन 3, अंडरस्टैंडिंग इन्वर्जन टेम्परेचर। अब हम एक ऐसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सबसे फेवरेट ट्रैप है, इन्वर्शन टेम्परेचर। ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जहां जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट का साइन 0 पर फ्लिप हो जाता है। अब यहाँ बहुत ध्यान से सुनेगा। इस टेम्परेचर के नीचे अगर गैस एक्सपैंड होगी तो कूलिंग होगी और इसके ऊपर एक्सपैंड होगी तो हीटिंग होगी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर ठंडी होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन, हीलियम और हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पर एक्सपैंड होने पर ठंडी नहीं बल्कि गर्म होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका इन्वर्शन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। ये सीधा थ्योरी क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में। इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं, इन इसेंथैल्पिक कर्व्स, और देखिए कॉन्सेप्ट और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कर्व का जो सबसे टॉप पीक है ना, ठीक उस पॉइंट पर जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट एग्जैक्ट 0 होता है। इस इन्वर्शन कर्व के अंदर गैस की कूलिंग होती है और बाहर की तरफ हीटिंग होती है। देखा, विजुअल्स के साथ समझना कितना आसान हो जाता है। सेक्शन 4, आइडियल वर्सेस रियल गैसेस। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एलिमिनेशन के लिए ये थियोरी बहुत काम आती है। इसका फिजिकल मैकेनिज्म समझें। रियल गैसेस में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्टिव वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। तो जब रियल गैस एक्सपैंड करती है तो उसे इन फोर्सेस के खिलाफ इंटरनल वर्क करना पड़ता है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी पड़ती है जो काइनेटिक एनर्जी के कम होने से आती है, और इसीलिए गैस ठंडी हो जाती है। लेकिन आइडियल गैसेस, भाई उनमें ऐसे कोई फोर्सेस होते ही नहीं है, तो कोई इंटरनल वर्क भी नहीं होता। और ये रही उसकी मैथमेटिकल गवाही।
ये डेरिवेशन एकदम साफ तौर पे प्रूव कर रहा है क्योंकि एक आइडियल गैस में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते, इसलिए उसका जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट एकदम परफेक्ट 0 होता है। मतलब एक आइडियल गैस को कितना भी एक्सपैंड करा लिया जाए, इस इफेक्ट से उसका टेम्परेचर रत्ती भर भी नहीं बदलेगा। सेक्शन 5 जेटी वर्सेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब ये वो पार्ट है जो अच्छों को कंफ्यूज कर देता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। देखिए, जूल थॉम्सन इफेक्ट पूरी तरह से कांस्टेंट एंथैल्पी पर बेस्ड है, जहां अंदर ही अंदर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का गेम चलता है। जबकि दूसरी तरफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब है कि बाहर से कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, लेकिन गैस सराउंडिंग्स पर जो एक्सटर्नल वर्क कर रही है ना, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर गिरता है। दोनों एकदम अलग थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सेक्शन 6 क्विक एग्जाम रिविजन। ओके, तो अब टाइम है एक रैपिड फायर मॉक टेस्ट का। देखते हैं आज के कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे से ग्रैस्प किए गए हैं। ये रहा पहला क्विक क्वेश्चन। एक आइडियल गैस के लिए जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए। 0, बिल्कुल सही। अभी हमने इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी देखा था। कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं, मतलब कोएफिशिएंट की वैल्यू सीधे 0। अब एक और बहुत ही फेमस ट्रैप क्वेश्चन। वो कौन सी दो मेन गैसेस हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर एक्सपैंड होने पर ठंडी होने के बजाय गर्म यानी वार्म अप हो जाती हैं? और सही जवाब है हीलियम और हाइड्रोजन। याद है ना? इनका इन्वर्शन टेम्परेचर इतना कम होता है कि रूम टेम्परेचर पर ही ये हीटिंग जोन में आ जाती हैं। तो आज हमने काफी सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसानी से डिकोड किया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव फिजिक्स एग्जाम को क्रैक करने की जो अल्टीमेट चाबी है ना, वो है कंसिस्टेंसी। कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कीजिए, उन्हें सिर्फ रटना नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में छप गया तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको फंसा नहीं सकता। आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर आज कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला है तो अभी SR Academy 2.0 को सब्सक्राइब करें, इस प्रेजेंटेशन को लाइक करें, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। Deep in winter, a natural gas transmission pipeline can become completely encased in thick, creeping frost, frozen solid against the surrounding landscape. This presents an immediate macroscopic engineering puzzle. Natural gas is pumped into these transmission lines at extremely high pressures and at relatively warm initial temperatures. As the viscous gas travels, it rubs against the interior steel wall. This fluid friction continually converts mechanical energy into heat. Furthermore, the ambient soil surrounding our underground pipe is typically warmer than the flowing gas. Basic conductive heat transfer dictates that thermal energy should flow inward from the earth to the pipeline. Despite the constant friction and the warmer surrounding soil, empirical measurements show the exact opposite happening. The temperature of the flowing gas actively plummets as it travels. This chart models the temperature profile across a 200-kilometer stretch of a test pipeline. You can see the initial high temperature steadily declining until around kilometer 176, the gas actually becomes colder than the undisturbed dirt surrounding it. This behavior defies classical ideal gas assumptions. To prevent catastrophic structural freeze-ups, pipeline engineers are forced to account for a complex thermodynamic phenomenon known as the Joule-Thomson effect. To understand what is happening inside the pipeline, we have to isolate the effects of a pressure drop without extracting any external mechanical work, like spinning a turbine. We also assume an adiabatic condition. The gas flows so rapidly that there is no significant time for heat to be exchanged with the outside environment. This schematic illustrates the Joule-Thomson porous plug apparatus. Upstream, high-pressure gas pushes a volume into the plug. Work is done on the system. Downstream, gas expands and pushes existing gas away. Work is done by the system. Since no heat transfers across the boundaries and upstream and downstream flow work is internally balanced, the sum of the gas's internal energy and its pressure-volume work remains perfectly constant. The entire expansion is an isenthalpic process. This defines the Joule-Thomson coefficient, the rate temperature changes with respect to pressure under constant enthalpy. Applied to a theoretical ideal gas, its internal energy is independent of volume or pressure. The coefficient evaluates to 0. For an ideal gas, temperature remains perfectly constant during a pressure drop. Ideal gas laws simply cannot explain the pipeline freeze.
To find the physical drivers, we pivot to real gases. By applying Maxwell relations, we link enthalpy, entropy, and volume to expand the coefficient. Substituting the van der Waals equation finally exposes the specific physical parameters controlling the gas. The A term acts as the mathematical representation of attractive intermolecular forces. The B term represents the physical volume of the molecules themselves, dictating repulsive forces. Joule-Thomson cooling will only occur mathematically when the fraction containing the attractive A term overrides the repulsive B term. In physical reality, that A term means real gas molecules act as if they are tethered together by weak attractive forces. As the gas flows and its volume increases, the molecules are physically forced further apart against the tension of these attractive tethers. Pulling the molecules apart requires energy. With no heat entering the system, this required work is drained directly from the molecule's own kinetic energy. Because temperature is a direct measure of average kinetic energy, this microscopic energy drain yields a macroscopic drop in the measured gas temperature. This graph plots the limits of the effect, bound by the dome-shaped inversion curve. If a gas is too hot or compressed too tightly, the repulsive B forces dominate, and the gas will actually heat up upon expansion. Natural gas pipelines operate firmly inside the cooling region of this curve. Any pressure drop guarantees the kinetic energy will be cannibalized to separate the molecules. Returning to the 200-kilometer pipeline, we can now see that the pipe itself acts as one massive, continuous throttling restriction. The friction causes a slow pressure drop, which induces relentless Joule-Thomson cooling. Here on this simulated temperature profile, we can track the exact state of the gas. By the time it reaches the 153-kilometer mark, the temperature drops below the hydrate equilibrium threshold. This triggers an immediate hazard. Crossing this line allows ambient water and hydrocarbons to crystallize into solid, ice-like hydrates that rapidly choke the diameter of the pipe. This phase diagram shows the secondary hazard. As pressure continues to drop over distance, the thermodynamic trajectory of the gas is forced straight into the two-phase region. Once it pierces the dew point line, the heaviest hydrocarbons drop out of the gas phase and condense into liquid pools inside the pipe infrastructure. Joule-Thomson cooling has now forced a transition in the fluid dynamics, turning a predictable dry gas transmission system into a hazardous two-phase flow environment. Operators cannot turn off the physics of expansion. To avoid the traps of Joule-Thomson cooling, they must actively manipulate the initial thermodynamic state of the gas. This requires intermediate compressor stations. Boosting the pressure recovers the necessary transmission capacity, but the mechanical compression inadvertently spikes the gas temperature. Before the gas re-enters the buried pipeline, it passes through massive aftercoolers, forced air cooling units designed to strip away the excess heat. This plot demonstrates the cascading efficiency gains of this cooling process. Dropping the starting temperature significantly reduces the volume of fuel required to drive the downstream compressors. By precisely calculating the necessary aftercooling, engineers dictate the exact starting coordinates on the phase diagram. This ensures the gas reaches its destination before its temperature crashes into the dew point. As an inescapable physical law, the Joule-Thomson effect dictates fundamental engineering, efficiency, and architecture of global energy infrastructure. When highly compressed gas expands rapidly through a nozzle, its temperature drops. But under specific conditions, this exact same gas will actually heat up. Welcome to SR Academy 2.0. If you're preparing for the BPSC or PGT physics exams, you are in the right place. This temperature shift is governed by the Joule-Thomson effect. It appears frequently on PGT and BPSC exams because it tests your understanding of how gases behave when they move past simple theoretical models. Let's establish our baseline. If you allow an ideal gas to expand freely into a vacuum, its temperature does not change. The molecules don't interact, so no energy is spent moving them apart. But real gases are different. When a real gas is forced through a physical restriction, like the porous plug shown in this diagram, it undergoes a throttling process. As the gas moves from a region of high pressure to lower pressure, the temperature actually drops across the barrier. The Joule-Thomson apparatus was built specifically to measure this shift. The ideal gas law predicts a temperature change of 0 here. Because real gases experience this drop, we must account for their internal properties to solve these exam problems.
The cooling happens because of intermolecular forces. Real gases possess attractive van der Waals forces acting between their molecules. To expand, these molecules have to physically pull away from one another. They have to do internal work to stretch against those attractive forces. Because this throttling process is adiabatic, meaning no heat is added from the outside, the gas has to find that energy somewhere. It steals it directly from its own kinetic energy. The molecules slow down as they pull apart. Temperature is a macroscopic measurement of that kinetic energy. Because energy was spent overcoming molecular attraction, the kinetic energy drops and the gas cools down. We measure this shift using the Joule-Thomson coefficient, which represents the change in temperature with respect to pressure at constant enthalpy. During expansion, the pressure always drops, meaning the denominator is negative. For the overall coefficient to be positive, the change in temperature must also be negative. A positive Joule-Thomson coefficient mathematically proves the gas is cooling. This graph reveals an important exception. Hydrogen and helium behave differently, actually warming up at room temperature. This occurs because of their specific inversion temperatures. If a gas's initial temperature is above its inversion curve, it will heat upon expansion. If it starts inside the curve, it will cool. Hydrogen and helium have extremely low inversion temperatures. Because standard room temperature is higher than their inversion curves, forcing them through a porous plug causes them to warm up. Let's test your intuition. Here are 5 rapid-fire questions standard in PGT and BPSC exam patterns. Question 1. What type of thermodynamic process is a Joule-Thomson expansion? Answer: isenthalpic, constant enthalpy. Question 2. What is the JT coefficient for an ideal gas? 0. Question 3. Does JT expansion do external work? No, all work is internal. Question 4. What is the value of the JT coefficient at the inversion temperature? 0. Question 5. Why does hydrogen heat up at room temperature? Because room temperature is higher than its inversion temperature. These 5 conceptual traps represent the most common errors made on exam day. Our final capstone is the formula for inversion temperature. Ti equals 2a over Rb. The variables a and b are the van der Waals constants. Take a screenshot of this master table. It summarizes ideal versus real gas behavior, coefficient signs, and temperature relationships. This table provides the logic required to solve any Joule-Thomson problem. दोस्तों, कंपटीशन टफ है और फिजिक्स में वही जीतेगा जिसके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हैं। अपनी प्रेपरेशन इतनी स्ट्रांग रखो कि एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज ना कर सके। सिलेक्शन लेना है तो मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। If this breakdown helped, like the video, share it with your study group, and subscribe to SR Academy 2.0 for more competitive physics strategies. Keep studying!